jealousy. I know you're bored, I know it's boring me. Now come alive, baby, get out the grave and I know you're bored. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up, but how sad. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up, but how does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up, but how sad. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, then it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up, but how sad. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let go of the rules, cause there's so much fun. Are you loving the feeling it? Touch me, are you in it? Don't see what you're seeing, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Oh no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up, but how sad. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up, but now come alive with me and quit the jealousy. I know you're bored, I know it's boring me. Now come alive, baby, get out the grave and I know you're bored. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up, but how sad. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up, but how does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up, but how sad. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, then it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh
हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यहाँ पे एक और नए मैच में। मोबा मास्टर की तरफ से यहाँ पे जो है मैच होने जा रहा है सीजन 1 की तरफ से। मैं हूँ आपका सचिन रहा और इसी के साथ बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए सीधा आपको दूंगा मैं यहाँ पे अपने को कास्टर यहाँ पे जस्टिन के साथ हम करने वाले हैं यहाँ पे कमेंट्री इस मैच के ऊपर। और ये दो टीम जो रहेगी, दोनों ही टीम बेहतरीन टीम्स हैं और इन दोनों का जो मैच है वो आज होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलेगा और इस मैच के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले सीधा हम जाते हैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग फेज की तरफ। तो जानेंगे जस्टिन से कि यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे किस तरह का गेम प्ले हमें देखने को मिलेगा। To me, your हम्म। is all that matters. जी बिल्कुल। हालांकि कि नई टीम बनी है लेकिन इनका परफॉर्मेंस हम देखते हुए आ रहे हैं। बाकी जो टूर्नामेंट्स है उसमें काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सिनर्जी किसकी टीम की यहाँ पे बेस्ट होगी, कौन जो है यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो के साथ यहाँ पे जीतेगा इस मैच को। बेस्ट ऑफ 3 का सीरीज होने वाला है दोस्तों। और बेस्ट ऑफ 3 की बात करें तो यहाँ पे तीसरा बैन जाएगा यूरेनस की तरफ और एक बार बेहतरीन बैन होता हुआ हमें दिखेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे बात करी जाए यहाँ पे दूसरी टीम्स की, डाकू सेना। हालांकि देखिए डाकू सेना का जैसे कि कहा है आप जस्टिन की, बहुत पहले से देखते आ रहे हैं हम लोग, बहुत लाइक नॉर्थ ईस्ट के टाइम से देखते आ रहे हैं। जब यहाँ पे एनसीए कप चल रहा था तो वहां वो तब से देखते हुए आ रहे हैं हम लोग। और काफी अच्छी टीम रही है, अच्छा खासा जो है इनका दबदबा बना है, नाम अपना अच्छा खासा कमाया है इन रिसेंट डेज पे। लेकिन यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है यहाँ पे स्थिति परिस्थिति यहाँ पे बनेगी। और स्थिति और परिस्थिति की बात करेंगे लेकिन इससे पहले यहाँ पे बैन किया जाएगा फैनी को। फैनी को सीधा उड़ाया जाएगा क्योंकि देखिए केबल जब लगती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे फैनी को उड़ा दिया गया है। इसी बात करें तो पहला पिक आएगा यहाँ पे फ्लेक्स की तरफ से। देखना पड़ेगा कि कौन सा पिक जाना चाहेंगे। क्या लगता है जस्टिन, यहाँ पे क्या यहाँ पे मेज उठाया जाएगा, क्या यहाँ पे फारसा उठाने का पूरा चांसेस है यहाँ पे? क्या लगता है फारसा को उठाया जाएगा? This land is our homeland, and it will soon be your burial ground. Magic is my life. Payback Your team is time. picking. Crowned by heaven's mandate. The southern जी बिल्कुल। लेकिन जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए काउंटर करने के लिए उठा लिया गया है जीतेन को। और यहाँ पे जिस तरह हमें पता है कि जीतेन से जिस तरह से यहाँ पे फारसा को काउंटर किया जाएगा, फारसा जैसी अपने अल्ट खोलेगी तो जीतेन वहां कहीं ना कहीं जो है अपना अल्ट का इस्तेमाल करते हुए उनका जो अल्ट है वो जो है पूरा कामयाब करने का कोशिश करेंगे। उसके साथ यहाँ पे कूफरा को पिक किया गया है। कूफरा आएंगे अपने ट्राइंड रेंज के साथ और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे अपनी रेंज वो जरूर दिखाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कितने बंदों को यहाँ पे रोक पाएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है अपने जो हैरिट है उनको रोकने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है पॉन्सी बॉल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा किस तरह से यहाँ परिस्थिति बनेगी। मिडिल लेन पे देखिए जीतेन जरूर उठा लिया गया। हालांकि देखिए ये बात करें जीतेन की, इतना कोई ओपी मैच नहीं है लेकिन चल जाता है काम जिस तरह से। तो यहाँ पे स्पेशली जो काउंटर यहाँ पे फारसा को करने के लिए तो स्पेशली यहाँ पे उठाया गया है, तो काफी अच्छा रहेगा। देखना पड़ेगा इसका जीतन का यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल करती है टीम और किस प्रकार यहाँ पे इसका जो है आउटकम निकल के आएगा। तो बात करें यहाँ पे तो चौथा बैन होता हुआ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ग्रेंजर को बैन किया गया है। नहीं चाहते हैं कि सामने ग्रेंजर आए क्योंकि उनका जो टैक्स सुनाना पड़ता है पीछे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से पड़ता है और बहुत ज्यादा डैमेज देता है। तो टीम को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए वहां पे रहता है, इसलिए उनको जो है हटाया गया क्योंकि अब गोल्ड लेन जो है वहां पे सेव करने की बारी है। Your team is I will banned. be the truth this world desperately needs.
하야부사 산조. Your team is banning. No one can escape जी my बिल्कुल। Your fist. team is picking. एस्मरेल्डा यहाँ पे कोशिश जरूर हो सकती है जाने की, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरफ जाना चाहते हैं एक्सपी लेन पे। लेकिन जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा एस्मरेल्डा अच्छी पिक रहेगी और वो उठा लिया गया है सीधा यहाँ पे। तो इस बार लापू लापू को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जो उनका हील आने वाला था, जो शील्ड आने वाला था, वो एस्मरेल्डा वहां रहेगी उनका काउंटर करने के लिए। और अगर बात किया जाए तो देखिए टीम्स काफी अच्छी मेरे को दिख रही है अभी बनती हुई। हालांकि अभी 2 पिक रहेंगे यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा कि इस तरह से खेलना चाहेंगे यहाँ पे। और उसी के समय यहाँ पे एम उठाना चाहते हैं, कौन सा एम पिक करना चाहते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कैरी के ऊपर ओवर किया जा रहा है, क्या कैरी उठाया जाएगा, या फिर अपने नीरज चोपड़ा जी वो आएंगे सीन में। थोड़ा सा कश्मकश जरूर हो रहा है। बात करें यहाँ पे हाइपर की तरफ जाना चाहेंगे, तो यहाँ पे कौन सा हाइपर उठाना चाहते हैं यहाँ पे। अभी जो है सुयू के ऊपर हवर कर रहे हैं, शायद सोच रहे हैं कि सुयू ले। हालांकि सुयू देखिए जब से उनके ऊपर नर्फ आया तो इतना चल नहीं रहे हैं, लेकिन एक अच्छा सुयू प्लेयर, उसको पता कि किस तरह से टाइट चेंज की जाती है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जस्टिन यहाँ पे सुयू की जगह अगर कोई दूसरा हाइपर लेते तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन सुयू भी देखिए कम नहीं है, परंतु उनका अभी जो है जिस तरह से नर्फ आया था कि मैजिकल डैमेज जो है वो पड़ेगा ही, उनका रिडक्शन जो है कम नहीं होगा। तो वहां पे जो है क्या लगता है आपको उसके बारे में। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक्चुअली डाकू सेना का ड्राफ्ट देख के लगता है वो ऐसा एक हाइपर जा सकते थे जो कि बिंदास घुस के मार सकता है, जैसे कि एक दायरोथ हो गया, उसके बाद और क्या क्या ऑप्शन है, एक अल्फा हो गया। ये सब हीरो लेके जैसे कि डायरेक्ट घुस के मार सकते हैं, क्योंकि उनका टीम का बैकअप आने वाला है। अगर ज़्यादा डैमेज रिसीव भी नहीं कर, क्योंकि फाइटर्स यूजुअली टैंकी होता है। और फ्रेडरिन आया, फ्रेडरिन का भी ज़्यादा सीसी नहीं है, माइनोटॉर को छोड़ के ज़्यादा पूरा टीम में ज़्यादा सीसी नहीं है। तो ऑब्वियसली एक ऐसा फाइटर जो कि आराम से घुस के अंदर मार सकता था, जैसे कि एक डायरथ हो गया और एक अल्फा हो गया, वो सब पिक्स ज़्यादा बेटर होता है सुयू के कंपैरिजन में। बट अभी तो ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है, तो बट स्टिल मैं बोलूँगा कि फ्लक्स स्पोर्ट का ड्राफ्ट काफ़ी अच्छा है। अगर सुयू अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स निकालता है और टीम्स अपने टीम को फेड करवा देगा, तो डेफिनेटली जीतने का चांसेस उनका ज़्यादा है यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल। देखिए जो टीम दूसरी डाइकू सेना है वो सिर्फ 2 ही डैमेज पे रिलाय कर रही है यहाँ पे। एक हैरी थे, पीछे से फारसा, इन 2 ही डैमेज डीलर, बस डैमेज डीलर के ऊपर रिलाय करती है। एस्मराल्डा जो रहेगी वहां पे लापू को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए वहां पे जरूर रहना चाहेंगे, लेकिन संभल के रहना पड़ेगा उनको भी। और फ्रंट लेना काफी अच्छे खासे उनके पास फैड्रिन है, यूटिलिटी जंगलर है, मिनाटोर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना तो एक बंदे को पूरा टारगेट किया जाएगा, चाहे वो एमएमओ या तो मेज हो, किसी एक बंदे को पकड़ा जाएगा और वो एक बंदे का खत्म होना तो वहां पे तय है। तो वहां पे देखना पड़ेगा किस तरह से स्थिति यहाँ पे बनेगी। और देवियों सज्जनों आ चुके हैं हम यहाँ पे लैंड ऑफ डॉन की इस सुहानी शाम में। और इस सुहानी शाम में जो है यहाँ पे फ्लक्स ई स्पोर्ट्स यहाँ पे आगे सामने उनका सामना करती हुई आएगी डाकू सेना। और इसी के साथ अपने अपने हीरो जाएंगे अपने अपनी लेन्स की तरफ और इस बार आगे बढ़ाएंगे इस युद्ध का आगमन। और आगमन के साथ अगर बात किया जाए तो दोनों ही खिलाड़ी जाएंगे अपने अपने जो है खेतीबाड़ी की तरफ। और खेतीबाड़ी करनी देखिए स्टार्ट हो गई है। टॉप लेन की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा जो है देखने को भी मिला था। और यहाँ की बात करें तो अभी रेड बफ से स्टार्ट किया है सीओ ने, टॉप लेन की तरफ जो है यहाँ पे जाना चाहेंगे। कुफरा गए जरूर थे वहां पे जंप मारने का प्रयास, परंतु वहां गलत जगह फंस चुके हैं और पीछे हटेंगे। अच्छा खासा उनको जो है यहाँ पे पोक किया गया। बात करें बॉटम लेन की तरफ तो बॉटम लेन पे भी अच्छा खासा लापू लापू को डैमेज दिया जा रहा है, मौका नहीं दिया जा रहा है। और लापू लापू यहाँ पे कोशिश करते हुए कि मिनियन का जो वेव है यहाँ पे रोकने का पूरा प्रयास करते हुए, लेकिन मिड लेन की तरफ यहाँ देखा जाए नजर तो छिड़ चुका है थोड़ा बहुत। और अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज वगैरह देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा भी देखिए शुरुआत चल रही है, हल्की हल्की पोकिंग बाजी जो है स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी दोनों ही टीम की तरफ से। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मीनो का जंप हो सकता है यहाँ पे कि धाराशाही होंगे कुफरा जी, नहीं बहुत ही कम मैच में बचे, बाल बाल एकदम कुछ जीवन दान मिला यहाँ पे। जी बिल्कुल, लाइक एक और सिंपल बेसिक अटैक मेज के तरफ से आता तो वहाँ खुफरा फर्स्ट ब्लड हो जाता है वहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बोला था लापू लापू थोड़ा बहुत
एस्मरल्डा के अगेंस्ट थोड़ा सा बुलिंग तो फेस ज़रूर करेंगे, तो उनको थोड़ा सा बच के खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा वेव फ्रीज करना पड़ेगा ताकि उनको आगे चल के ना जाना पड़े। और बात करें गोल्ड लेन की तरफ, दोनों गोल्ड लेनर्स बहुत ही सेफ खेल रहे हैं और हैरिथ यहाँ पे थोड़ा सा फ्रीज करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि मॉस्को थोड़ा सा एग्रेसिव खेले और सुयू का रोटेशन में आ जाए। और बात करें फ्रेडरिन का, वो भी आ चुके हैं अपने रोटेशन में और फर्स्ट ब्लड, और हमारे जेटियन को मृत्यु के द्वार पहुंचा दिया जाएंगे। ओ लुक एट टॉन को देखो, फ्रेडरिन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था बट फॉलो अप नहीं आया, तो डेफिनेटली वो लोग अपना अभी टर्टल ऑब्जेक्टिव्स के तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल, वो एक्सपीरियंस जो है वो जरा निखर के आ रहा है। वो दिख रहा है कि क्यों यहाँ पे जो डाकू सेना थी एक टॉप की टीम में जानी थी, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे तानाशाही किया जाएगा। इनको अकेले पकड़ा गया वहां पे, सोच रहे थे कि बच जाएंगे वहां पे, लेकिन उनको जो है मृत्यु के द्वार भेजा गया। पीछे से यहाँ पे अल्ट आएगा जरूर, अच्छा खासा डैमेज देने का प्रयास, बहुत ही अच्छा डैमेज दिया यहाँ पे, लेकिन सुयू फंस चुके हैं यहाँ पे। टर्टल लेने का प्रयास करेंगे लेकिन एस्मराल्डा नहीं छोड़ेंगे उनको, पीछे से बहुत ही कम एचपी पे जाएंगे, सीधा धाराशाही होते हुए सीधा जाएंगे रिस्पॉन्स स्क्रीन की तरफ। अगर बात करें, काफी अच्छी तरह खेल रही है दोनों ही टीम। और यहाँ पे देखिए जंगलर जो है गए, उनके साथ दोनों ही जंगलर यहाँ पे धाराशाही हो चुके हैं, परंतु अभी जो उनका जंगलर जो है वो आ चुका है। इसी के साथ बात करें तो लापू यहाँ पे रहेंगे जरूर, थोड़ा कोशिश करना चाहते हैं लेकिन संभल के रहना पड़ेगा। एस्मराल्डा वहां पे रहेगी, उनको जो है दिक्कत देने के लिए जेतेन का अल्ट पड़ेगा, काफी अच्छा अल्ट है, लेकिन मिनोटॉर हील करते हुए निकल जाएंगे बहुत ही कम एचपी पे। और उसी के साथ यहाँ पे उनको दिया जाएगा यहाँ पे जीवन दान, और जीवन दान के साथ साथ ट्राइंड रेंज मारी बहुत अच्छी है, 2 बंदे यहाँ पे नॉक किए हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, फॉलो अप पे इतना डैमेज है नहीं जो इतना ज्यादा उनको रोक पाया। उसके साथ अल्ट का प्रयोग करेंगे फेडरिन, लेकिन शेकर का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जंगल, अब जो है जो जंगल एरिया है वो पूरा कंट्रोल में आ चुका है। लेकिन टॉप लेन की बात करें तो बहुत ही कम एचपी है मॉस्को, फिर दोबारा यहाँ पे जीवन दान मिलता हुआ, एक के बाद एक यहाँ पे जीवन दान मिल रहे हैं। और लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अब खराब, क्योंकि अब जंगलर जो है उनकी स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है, क्योंकि एनिमी जो है वो इन्वेड कर चुका है पूरी तरीके से फ्लक्स ई स्पोर्ट्स के जंगल पे। बिल्कुल, डाकू सेना अभी अपना ग्रिप ले चुके हैं। फेडरल स्ट्राइक हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट सिंस कुफरा एक टैंक है, उनको ज़्यादा डैमेज लेंगे नहीं, बट स्टिल वो उनको रिकॉल करने के लिए बाध्य करा देंगे यहाँ पे। और एसओडी फेंका था बट किसी को कनेक्ट नहीं होगा, तो अगेन हम लोगों को एक फाइट देखने को मिल रहा था। लापू एक बेचीदा जगह पे स्थिति पे फंसे थे, लेकिन वो निकल जाएंगे। बट यहाँ पे टायरेंस रेंज आ चुका है। ओ जी हाँ बिल्कुल, परंतु उनको जो है मृत्यु का दंड का सामना करना पड़ा। मॉस्को अकेले हैं, 3 बंदे टॉप लेन पे हैं, 4 बंदे आ चुके हैं, पूरी टीम आ चुकी है टॉप लेन पे, और मॉस्को को सीधा भेजा जाएगा मृत्यु के द्वार। बहुत ही अच्छा रोटेशन आता हुआ, मौका नहीं दिया जाएगा उनको कुछ भी करने का। बॉटम लेन की बात करें तो वहां पे वो सीधा टावर के ऊपर फोकस है, क्योंकि उनको पता है कि अभी यहाँ पे कुछ करने को है नहीं। और एस्मराल्डा उनको पता था कि देखिए कि पूरा जो टीम है वहां पे रहेगा, क्योंकि अभी जो है लापू को अच्छा खासा उन्होंने अर्ली गेम में डोमिनेट किया है, तो अभी पुश नहीं कर पाएंगे। तो अच्छी खासी चाल उनकी तरफ से रही और अच्छी तरह से यहाँ पे खेला गया, एग्जीक्यूट किया गया, और मॉस्को अभी जो है स्ट्रगल करते हुए जाएंगे। बात करें थोड़ी सी आइटमाइजेशन की, देखना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन सा आइटमाइजेशन बना है। 1-6 का स्कोर चलता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ यहाँ पे फाइट छिड़ चुकी है। आइटमाइजेशन की बात करते करते इसी के साथ यहाँ पे क्रॉस फोर का इस्तेमाल करता हुआ जवान फोर्स मारी गई है यहाँ पे, और उसके साथ अच्छा खासा डैमेज दिया गया है कुफरा को। और देखा जाए ना, कुफरा को ज्यादा यहाँ पे मौका मिल नहीं रहा है कि जैसे रुक के अगर जो है फाइट ले पाए, क्योंकि सामने आना पड़ता है उनको बार बार निकल के, और पीछे से जो है बाकी जो डैमेज है वो अभी पर्याप्त नहीं आया है, क्योंकि एमएम के पास अभी जो है फार्म नहीं आया। जब तक आइटमाइजेशन नहीं आएंगे तब तक उनको दिक्कत होगी, और लगातार देखिए जंगल जो है उनका खाया जा रहा है। सुयू कहीं ना कहीं जो है पीछे रह चुके हैं इस घोड़े की रेस में, और यहाँ पे धीरे रह चुके हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा नीरज चोपड़ा का भाला आया है, मारा जरूर है, लेकिन क्या बचा पाएंगे यहाँ पे, जी रही बहुत ही कम एचपी पे भागना पड़ा उनको मॉस्को को। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा अंदर गए हैं, मिनोटॉर अच्छा खासा मारा है, पूरे अच्छी तरीके से अल्ट का इस्तेमाल करते हुए नॉक किया था, प्राइम रेंज का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन फॉलो अप पे डैमेज की कमी, और मारा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो रही है, कोशिश पूरी कर रहे हैं लापू पीछे से अपनी टीम के लिए किल जुटाते हुए एक और किल निकालने का प्रयास करेंगे। बेसिक अटैक मार रहे हैं, कोशिश रहेगी, परंतु अपना जो है यहाँ पे बर्ड बन के निकल जाएंगी वो। और इसी के साथ यहाँ पे एस्मराल्डा शील्ड आया था, उसका फायदा उठाते हुए, उनको पता था कि वहां पे शील्ड आएगा, उसी का फायदा उठाते हुए सीधा उनका जो किल है वो उठाया जाएगा यहाँ पे। इसके साथ यहाँ पे मिड लेन का प्रयास करेंगे बचाने का, लेकिन यहाँ पे स्टैश मार के सीधा उनको दिया जाएगा मृत्यु का दंड हैरिथ के द्वारा। ये टीम जो है ना यहाँ पे थोड़ी हड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे बार बार एक के बाद एक किल हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, डैमेज की पूर्ति अभी नहीं हो रही, जो डैमेज है ना अभी कमी, जो फार्म में कमी है वो अब जो है हमें देखने लगा है यहाँ पे।
जी बिल्कुल, डाकू सेना को पता चल चुका है कि उनका फार्म अभी ज़्यादा है और आप लोग उनका एग्रेशन ऑलरेडी देख सकते हो। एस्मरल्डा 1v2 करने के लिए ज़रा सा भी नहीं इतरा रही और हैरिथ भी टर्रेट के अंदर जाके मार रहा है और इसके साथ फेडरल स्ट्राइक आ चुका है। जी हाँ बिल्कुल, ये स्ट्राइक यहाँ पे मारा गया, डिस्ट्रॉय किया गया टावर को, लेकिन पीछे से हेड मार के फाइटिंग करेंगे ट्राई यहाँ पे जो है अपने खूंखार से उनको जो है यहाँ पे पकाया गया, पीछे से अच्छा खासा डैमेज आता हुआ, लेकिन फिर दोबारा बहुत ही कम एचपी बचेंगे यहाँ पे। इसी के साथ पीछे से आते हुए सपोर्ट काफी अच्छा आता हुआ यहाँ पे हेरेथ का अच्छा खासा डैमेज देते हुए सीधा 4 के 4 बंदे धाराशाही हो चुके हैं। 5वां बंदा यहाँ पे धाराशाही होगा। जी हाँ बिल्कुल, पूरी टीम वाइप आउट कर दी गई है यहाँ पे डाकू सेना अग्रेसिव खेलती हुई यहाँ पे। और इसी के साथ फार्म गैप फिर दोबारा यहाँ पे बढ़ चुका है और बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस समय। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 8K का फार्म डिफरेंस आ चुका है। क्या लगता है यहाँ पे वापसी होने का क्या चांसेस रहता है जस्टिन? क्या यहाँ पे जो है टीम फ्लक्स वापसी कर पाएगी इस मैच में? क्योंकि जो है फार्म का डिफरेंस अभी बहुत ज्यादा रहेगा। और इसी के साथ टावर की बात करें तो टावर भी उनके लगातार टूट ही रहे हैं। जी बिल्कुल, आई मीन उनके पास एक खुफरा है, अगर एक अच्छा 5-man सेट चिपका देंगे तो ऑब्वियसली एक कमबैक का चांस ऑब्वियसली रहता है। खुफरा इसीलिए बहुत ज़्यादा स्कैरी है, बट लगता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चला जाएंगे और अपने टीम को तो डेफिनेटली वहाँ से निकल जाना चाहिए। बट खुफरा अटेम्प्ट लेंगे किल लेने के लिए, बट मारे जाएंगे। जी बिल्कुल, मारे जाएंगे इस स्ट्राइक के द्वारा। यहाँ पे देखिए 3 बंदे धाराशाही होते हुए और इसी के साथ 2 बंदे रहेंगे डिफेंड करने के लिए। थोड़ा पीछे रह के संभल के खेलना पड़ेगा जेटीएन के ऊपर हमला करते हुए यहाँ पे। और लास्ट का टावर अगर ये जाएगा तो दिक्कत बढ़ सकती है, टावर बचाना पड़ेगा। अगर ये टावर नहीं रहेगा तो लॉर्ड के साथ जब प्रेशर आएगा, मिनियंस का प्रेशर आएगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। और इसी के साथ लगता है कि शायद इस लॉर्ड के साथ यहाँ पे एंड करना जरूर चाहेंगे। जी बिल्कुल, इसी के साथ अंदर घुसते हुए यहाँ पे गए जरूर है, अल्ट का प्रयोग करेंगे। टावर के अंदर भेजा गया था परंतु यहाँ पे स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए फायर सा रोकेंगे जरूर। और सीधा लापू लापू बहुत ही अच्छी तरह घुसे अंदर है, लेकिन बहुत ज्यादा अंदर जाएंगे। देखिए अभी आपका फार्म नहीं है, फार्म होता तो शायद जो है घड़ी कुछ और होती, लेकिन अभी थोड़ा संभाल के खेलने का समय आ गया, पीछे रह के खेलने का समय आ गया है। लेकिन क्या करे, यहाँ पे कूल डाउन की तरफ भेजा गया है जेटीएन को। बहुत ज़्यादा डैमेज आ चुका है हमारा हैरिथ का। होली क्रिस्टल ले चुके हैं, स्टारलिम साइड भी आ चुका है। सो ऑब्वियसली टीम्स को अंडर एस्टिमेट उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फ्रेडरिन अकेले लॉर्ड लेने का अटेम्प्ट ले रहे हैं, एस्मरल्डा डेफिनेटली आएंगे। सुयू थोड़ा आउटप्ले करने के चक्कर में, बट हैरिथ ने उनको ऑलरेडी स्पॉट कर लिया और मिनट और मुझे नहीं लगता वो अभी मूड में है सुयू को पकड़ने का। बट डेफिनेटली वो थोड़ा सा पोक करेंगे, थोड़ा सा मेंटल गेम खेलना चाहेंगे, बट उनके पास है प्यूरीफाई। जी हाँ बिल्कुल, उसके साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे मीनो रेज मारा गया और उसके साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छे स्टन दिया, पीछे से आएगा फॉलो अप। देखिए बहुत अच्छी तरीके से आता है। कोई भी यहाँ पे जो है टैंक आते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए या फिर टावर के अंदर जंप करने के लिए, तो पीछे से उनका जो फॉलो अप है वो बहुत अच्छी तरह आता है और डैमेज भरपूर आता है वहां पे। और ये डैमेज की कमी कहीं ना कहीं जो है हमें देखने को मिल रही है। और उसी के साथ यहाँ पे रिकॉल का प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है हमको। रिकॉल के साथ थोड़ा सा प्रदर्शन किया जा रहा है। लॉर्ड जो है वो आ चुके हैं, अपने जो डायनो है रॉर वो आ चुके हैं यहाँ पे। और इसी के साथ ये जो टरेट है वो लेने का प्रयास किया जाएगा। सुयू यहाँ पे जो परिश्रम करते हुए कि किसी तरह से रोका जाए। और यहाँ पे बॉटम लेन की बात करें तो बॉटम लेन वो जा चुका है, वो टूट चुका है इनका। पीछे से यहाँ पे कोशिश करते हुए मॉस के पास अभी आइटमाइजेशन ही नहीं आए कि आइटम अगर जब तक जिनके जो है आइटमाइजेशन आएंगे तो बहुत देर हो सकती है शायद। और इसी के साथ यहाँ पे बात करें तो 2 आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है उनका जो है डीएचएस वो नहीं आया है, वो कोर आइटम नहीं आए। जब तक 3 कोर आइटम नहीं आएंगे जब तक डैमेज नहीं आएगा। और इसी के साथ कोशिश इनकी रहेगी कि इसके साथ यहाँ पे अल्ट किया जाए। अल्ट का प्रयोग करते हुए बहुत ही अच्छी तरह रोकने का प्रयास बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे किया जरूर है, लेकिन फिर दोबारा मिनोरेज का इस्तेमाल करते हुए पीछे से आएंगे एस्मरल्डा, सीधा लेके जाएंगे मॉस्को का किल। और ये जीतियन अकेले बचेगी यहाँ पे। पीछे से देखिए मिनियंस आ चुके हैं, मिनियंस आ चुके हैं और इस मिनियन के साथ शायद यहाँ पे एंड करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उनको सीधा यहाँ पे बहुत अच्छी तरह यहाँ पे खूफरा ने आ रही है यहाँ पे स्किल बहुत अच्छी तरह मारते हुए पीछे से डैमेज देने का प्रयास। लेकिन मिनियन आ चुके हैं बेस में, मिनियन बचाने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में एंड करने के चक्कर में जेटीएन को जो है मारने के चक्कर में थोड़ी सी गलती कर बैठे। शायद एंड कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन अभी जो है पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि अभी जो है मिनियंस आ चुके हैं, पीछे से बैकअप आ चुका है, तो पीछे हटते हुए जाना पड़ेगा इनको। फिर दोबारा से टावर जो एक और निकाल लिया गया। इसी के साथ टॉप का जो टावर है वो भी ला आ चुका है, बॉटम के टावर आ चुके हैं, पूरे टावर जो है वो टूट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो बढ़ चुकी है। और इस दिक्कत के साथ यहाँ पे एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि जाए अंदर और यहाँ पे डैमेज देने का प्रयास करें। मॉस को पीछे से रहेंगे डैमेज देने के लिए और अच्छा खासा डैमेज देंगे, लेकिन लापू लापू अंदर घुसते हुए 4 बंदों के बीच में घुस चुके हैं और अच्छा खासा डैमेज
लेंगे जरूर, कोशिश करना चाहते हैं कि इस तरह बच जाए। अच्छा खासा स्टन देते हुए निकलने का प्रयास, परंतु लेजेंडरी उठाएंगे यहाँ पे एस्मेराल्डा और शील्ड का इस्तेमाल करते हुए दिया जाएगा उनको मृत्यु का दंड। डबल किल अपनी झोली में भरेंगे, फैटिन को दिया गया मृत्यु दंड। इस बार फिर से जो है यहाँ पे जल्दबाजी न करते हुए थोड़ा पीछे रखे अगर खेल तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे बचाया जाए गेम। बहुत ही कम एचपी बचेंगे मॉस को बार बार, और यहाँ पे लगातार देखिए जवान फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। क्रोनो डैश लगातार यहाँ पे मारा जा रहा है, और जिस तरह से यहाँ पे डैश पड़ रहा है उसी तरह से यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ती हुई, और यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ रही है। मिनियंस ऑलरेडी जो है बेस पे लगातार हैं, और यहाँ पे जो है डैमेज दिया जा रहा है इनको। थोड़ी सी परिश्रम यहाँ पे रहेगा कि रोकने का, कि यहाँ पे किस तरह से अगर रोका जाए। लगातार टेंशन जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, एक के बाद देखिए टेंशन जो है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि मिनियंस के प्रेशर ही इतने ज्यादा है कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो है मैं बोलते नहीं थक रहा हूँ। यहाँ पे एक के बाद एक जो है मिनियंस वो सीधा बेस पे ही आ रहे हैं, पूरे मिनियंस जो है यहाँ पे खत्म कर दिया जा रहा है। सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्स स्पोर्ट्स को। जी बिल्कुल, आई मीन उनका ड्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था, अच्छा भी था, बट अगर वो लोग अर्ली गेम से थोड़ा एग्रेसिव दिखाते और ज़्यादा मिस्टेक नहीं करते तो ऑब्वियसली उनके चांस था। पर अब अगेन फाइट स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा यहाँ पे जीतन कार्ड देखने को मिला। पीछे से सीधा उनको जो है यहाँ पे मारने का प्रयास किया था, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। डैमेज देखिए अभी नहीं रहेगा, डैमेज की कमी वो कहीं ना कहीं वो खलती हुई दिख रही है हमको, और इस डैमेज के साथ यहाँ पे रोका जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज देके रोका जाएगा, लेकिन पहला जो गेम है शायद यहाँ पे एंड होने के कगार पे रहेगा, और इसी के साथ जीतन को यहाँ पे रोकने का प्रयास किया जा रहा था। चाह रहे थे कि सीधा घर से बाहर निकाला जाए उनको, जीतन को बोला जाए कि अरे आ जाओ भैया, आपका पेडे आ गया है, बाहर आइए, पेडे एरिया रेंट ड्यू है आपका। तो यहाँ पे देखिए स्थिति जैसी बनी यहाँ पे कहीं ना कहीं, और सीधा यहाँ पे जो है लापू लापू को टारगेट किया गया जो है एस्मेराल्डा के द्वारा। और अगर दूसरी बात करें तो शायद अगर यहाँ पे जो है एक अच्छा हाइपर उठाते तो शायद जो है स्थिति थोड़ी सी कुछ और हो सकती थी, क्योंकि हमें पता है कि अपना जो यहाँ पे हाइपर है वो इतने अच्छे अभी देखिए हालांकि नहीं चल रहे हैं। और शायद इसके बाद जो है बेस्ट ऑफ 1 में तो अभी यहाँ पे जो है डाकू सेना जो है वो जीती है। अभी इसका 2 मैचेस और है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन बनता है। अगर डाकू सेना यहाँ पे दोबारा जीत जाती तो वो आगे क्वालिफाई कर जाएगी। तो रिकेट स्पोर्ट्स के पास अभी यहाँ पे एक मौका रहेगा जो है वापसी करने का। तो इस बार जो है देखते हैं कि यहाँ पे ड्राफ्टिंग फेज में क्या दिक्कत जो है यहाँ पे चेंजेस आने को दिखेंगे हमें। जी बिल्कुल, इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, कहीं मत जाइए, हम अभी आते हैं 5 मिनट में। और जी
Welcome back to the second match, guys. This is Asher here with my co-caster Justin with me, and the first match was very exciting between Flux Esports and Dakusena. That was a very dominant win and very, very aggressive gameplay shown to us by Dakusena, I might say, and it was a very exciting match, but definitely some mistakes were made in draft from the side of Flux Esports. Will they be able to turn back time and perhaps take a point over Dakusena so that it can be actually a best of three? We can see three matches, or will it be a clean sweep between Dakusena and Dakusena and Flux Esports here? But we're gonna be diving into the drafting phase now, and we're gonna be seeing what these teams have planned for the next match. Right now, we can see that Flux Esports already banning out the Florin here. That's quite an interesting ban here from their side, and we can see that Dakusena choosing to ban out the Lancelot and the 1-1. And those are very interesting picks, I might say, because we can see that these are very meta picks right now, and they're bound to go toe to toe with these heroes. What do you think, Justine? Exactly, man. These people, they have something different in their mind always, man. Dakusena is full of surprises, because Lancelot, people doesn't usually ban Lancelot, but I guess they have come up with a draft that really works out. It doesn't really works out against the Lancelot, so you never know. That might be one of the reason, or any assassin hero, since they have banned out the Fanny as well. So this could be one of the reason as well. But again, they are really good at drafting, since we have seen from the last game, even though the draft did seem to a little bit weak, but they have got a really dominant victory on the last one. And also, I like to say, if Lucky Sport have picked up, their draft was equally was kind of fun, fine also. But after the nerf of the Suyu, it didn't really worked out pretty well. And since Suyu is a really early game hero, and despite of the fact he was getting invaded and getting snowballed so hard, so that says a lot that how weak Suyu is nowadays. But right now we can see the first pick, and it will be none other than the Kimi in the mid lane. So yeah, that's the LCF stuff going on here, Asher. Definitely, as we can see that Dakusena prioritizing the Kimi pick over all of the picks that have been available for them. Definitely, they want to flex this Kimi, perhaps in the middle of the goal lane, perhaps. But it's gonna be seen how they want to use this Kimi. Is it in the goal lane, or is it gonna be in the mid lane? And as a counter, as an answer to the Kimi, we can see the Phobias along with the Falsa being picked up for the side of EXP and the mid lane on the side of Flux here. And are they gonna? Is it gonna be a placeholder for this Ranger, or they wanna pick it up right now? I think they might wanna take another heroes, perhaps not the MM right away, and they don't wanna reveal the MM right now. So this Ranger might be a placeholder, I might think. And they might want to go for an EXP, which can really, trade blows with that Phobius, perhaps an Arlot, or maybe even a Ruby, even. But it seems that they want to they don't want to give another chance for their opponents here. Dakusena locking down that glue, as well as that Ranger on the cooling. So definitely we can see that this Kimi is gonna be a mid lane pick for the side of Dakusena. And definitely they want to pick another counter before it's banned out, so they might go for the Erythel or the Harith here. Yeah. Oh, the Harith has been banned. My bad. But what do you think? Because yeah, Erythel is a really good counter to the Granger, but I was really expecting a CC pick, to be honest, because CC works really good against Phobius, but still, just their team needed some tanky frontliners, because they have like two squishy marksmen, one in the mid lane, one in the gold lane. So definitely they want to provide them the sandbag to
to utilize their damage as much as possible. But again, with great power comes great responsibility. They have to stay safe. If right now I cannot see someone who can dive the backline, but again, there could be assassins, maybe a Hayabusa that can go to the backline and take them down. So they have to protect them, or maybe they have to stay. As a person, they have to stay really careful because they could be taken down by an assassin really easily. So yeah, let's see how the Dakusena will handle their drop. But right now we can see the bans. It will be the Kelia ban because they have shown them. And talking about Hayabusa, they have just banned out the Hayabusa. That's hilarious. Yeah, but because I thought, like Justin, they could have utilized that Hayabusa, and I think that Dakusena has one of the best Hayabusa players here in this tournament right now, because I have seen Kashi play Hayabusa also, and he is brilliant at it. And might I say, like, the team lineup that the Flux is, they have shown right now as of yet, it's very vulnerable against a Hayabusa, because it can just go in with a quad shadow, throw in a Phantom Shuriken, and just do the combo with his shadow kill and just come out unscathed. So that's gonna be that was a very wild ban in my opinion, but definitely they have chosen to ban out the Hayabusa. And here we can see that Kalia as well as the Minotaur. Your Minotaur definitely was a big problem creator, and like very good set. It's very good setting up the team fight. So definitely they have decided to ban it out for Dakusena. So it's not gonna be we're not gonna be seeing any Minnow and Rage anytime soon. And very we can see that there's a pattern going on here. Like they wanna ban tanks and EXP laners as much as possible because it is the meta right now. So definitely Kalia, Minotaur, along with that Kufra as the final ban coming in from the side of Dakusena has been locked in, and it all comes down to the last 4 picks from both these sides. What's gonna be, Justin? Yeah, like you say, those two tanks were the previous tanks. Like both of the teams were using. So they have just the Minotaur was used by Dakusena, and Flux have decided to ban it out. And same goes for Kufra. So this is pretty funny. But right now they have to play with 2 different roamers. So what is gonna be? They need someone to dive the back line again. A Kaja that will basically stay in the front line. And a revitalized Kaja I don't really prefer. I guess Flicker is the best choice, but also depends if he's really comfortable with that revitalized. Right now a Chip could be a good pick, but still I can see a lot of aggression from Flux Esports right now, and there is no like the potential threat for the backliners, which could be really scary in terms of late game. But right now that Kacha is being hovered over could be the potential roamer of their team. But let's see what will be the jungler. Any guess, Asher? Definitely, I would have liked to see the Hayabusa gameplay coming in from Dakusena, but it seems they want to take a different route here. Oh, they instantly switch sides, and they have logged in onto that Matilda as well as a Bakshia as the jungler for their side. That's going to be a very interesting match, because we can see that, like, in many pro players, like you see that when there is a Kimi being picked in either of the sides, you see a Bakshia in opponent of that, not in the same team very often. So that's what we're going to be seeing right now. And we saw the matchup yesterday between the Granger and the Iritil. Despite having the counter advantage over the Granger won the match. So this match can go either way. Definitely, I'm looking at the Kaja with interest, because I'm not sure how much he is going to be contributing to a team fight with all these heavy hitters like Matilda as well as the glue around, and add into the factor that they have a Bakshia Dakusena. It's going to be very difficult for the Kaja to do any pickups and with his team around. So it's going to be very, very interesting to see how he does the play around the maps. But with that, we can see that Winehouse has picked up the Joy as the jungler from the side of Flux. That was quite an interesting choice, given that they have so much dashes and they have so much sustain on the side of Dakusena.
So the main damage dealer right now on the side of Dark Fusena are going to be the Kimi and the Granger. And from the side of Flux, it's going to be the Farsa and the Earthel who's going to be dealing the most of damage. But definitely they have the X factor of a Joy who's going to be contributing and doing the map around play. So we're going to be seeing who is going to be coming out on top between these two teams. Will Dark Fusena take a clean sweep home, or will Flux come back and give them an answer for a third game? That's right, and with this, guys, we are back into the land of Dawn, and you guys are watching MOBA Masters and the teams. Let me introduce you to the teams. It's Dakusena versus Team Flux Esports. So on the caster desk, my name is Jeffrey Justin, and it is none other than Asher on the caster desk, who will be the one that will bring you the action tonight. But yeah, with this, Asher, what do you think? What about the rotation? I don't think these two teams need any introduction, Justin, because these two teams have really made a name for themselves right now, and on the tournament scene, whether it is Dakusena or whether it is Flux teams, and both teams doing a solid job right now in the mid lane. You can see that early skirmishes have already begun with that Kimi poking down that Farsa, but definitely getting a reverse poke and definitely delaying some of the farm from that Farsa, and not letting her level up to level 2. So that's going to be a bit problematic, given the range advantage clearly lies in the favor of Kimi here. But it all can turn any way very soon. And definitely we can see that some early aggression and really early rotations coming in from both the teams right now. Kyashi managing to able to take away that beetle from the hands of that Joy was very, very eventful right now. I'm not sure if Winehouse will be able to reach that level 4 before that turtle fight starts, but that's going to be interesting, because very early aggression as well as the team fight dominance, clearly we can see that Dakusena have the upper hand in both the teams, and right now we haven't seen a first blood as of yet. Teams just playing it safe, and none of them are interested to lose their lives very early in this game, and they would just keep on playing safe. But yeah, we can see the split plate onto Waves, and Farsa is gonna be taken down by the hands of Hiyatsu, a first blood on the hands of Matilda, and that's gonna be setting up that the team fight and the objective takedown for the side of Dakusena right now. And that's going to be very eventful, because the first turtle is always, teams always eye for that. But I don't think this Joy will be able to. But here comes Joy, and he steals away the turtle. That's a very good engage with that infernal pursuit. Phoebe is going on, and he will be caught, and he will be taken down by Peekaboo Predator. That was quite an eventful team fight, but they are still going on. Jazz engaging onto Winehouse, taking a revenge kill for taking down that turtle for them, and that was quite an eventful team fight, I would say. And that's the score, bringing down to 3-4-0. The turtle was in favor for Flux, but definitely the team fight, another kill added on the scoreboard for the side of Dakusena here. They just want to invade the buffs. They don't want to let go of any momentum in the game. They just doing macro plays across the map right now. And if you're gonna take the turtle, then we're gonna take some kills from you. We're gonna unalive you, and we're gonna send you back to base. That's what they have in the minds right now, I think. And they're just doing it right now. And as usual, that's a brawl in the EXP lane. But as I said, the Granger definitely has a counter in its opponent, but he is clearly winning the lanes here thanks to that Matilda and Kimi. And the early rotations coming in from his team is really helping him snowball in the early game, which is really definitely going to be adding up in the late game. And we're going to be seeing how that Granger manages his lane against the Irritel. But definitely the first point good was from that Granger. What do you think, Justin? So as the first point was taken right now, even if the counter is there, but definitely it was quite an interesting kill given the support of Matilda and Kimi to add on top of it. And yeah, but here comes the Suckling Eagle on to Khaja, but he will be flying away. He's not flying anywhere soon. But here comes the electrifying beats right on top of that Ranger. But Matilda is there to save the day, but not for long. But here comes Phobius to finish up that kill. And Kyashi will fall down along with Hiyatsu. And things are not looking good. Definitely, Flux managed to
like win some momentum here and there, but in terms of objective control, they have the upper hand with that Joy. So how they're gonna be doing here, but they are ignoring like that split onto waves and instead focusing onto that turtle, definitely hoping that Winehouse steals it, and he will. A very good turtle steal by waves there, and they do not want to engage right now. Flux, they're just choosing to back away, but I think that Kiro will be caught up in that fight, and that traction pulse, and definitely pulling up Phobius. He will be caught up, and he will go down to the base. Red team hero has been slain. Red team hero has been slain. That was a very bad overextension by that Urtil, might I say, like using up that heavy crossbow and engaging onto a glue when he can soak up that much damage. And he's just potentially a tank on the EXP lane. He's just one of the best tanks and sustainability EXP laners right now. So if you just engage with a glue on a side lane and like might I say without any team support, then you're not using time, you're just wasting it, and that was a very bad move on my part, and that's gonna give a window for the side of Dakusena to prioritize onto that turtle right now. Definitely, two turtles were capitalized by Flux by the help of that Joy, but definitely the third turtle is gonna be going on the hands of Dakusena here, and with that they have also managed to take down waves in the mid lane. That was a very solid engage coming in. Joy forced to use the electrifying beats early, but definitely that was a good move, taking down Kyashi in the top lane in that skirmish. And Jazz, without an ultimate, he is caught with that Phobius, and Phobius is just like, you're not, I'm not caught in with you, I am you caught in here with me. But it seems that Kiro has made a mistake, and definitely he will be punished by the rest of the team of the Dakusena here, because he overstayed his welcome. He is gonna be taken down anytime sooner or later, because but that sustain coming in from Phobius is just insane right now. Being able to sustain, like I was thinking like Flux teammate would just join in a team fight, but nobody was there. They just left him to die. That was that was pitiful. But that sustain coming in from Phobius was really amazing, but nothing to capitalize on the side of Flux. So that's gonna be a very bad team fight and decision coming in from Kiro, but he will going down, and along with that, the mid lane turret has fallen down, and R10 will fall down against that Ranger. And might I say that early snowball really favors that Granger, because like that Irritel is not doing so well on the goal lane. 0-3-3, like when you are a direct counter for a hero, it's not something that's expected. Oh, but Winehouse making an escape from that split from that glue on the top lane, that was quite an amazing feat, I must say. Why, here comes the traction pulse, but definitely a dash is here to save the day, so Joy won't be caught anytime soon. But definitely Flux is being driven into a corner by the team Dakusena right now before the Lord is spawned. Yep, totally. The Lord has spawned, and Dakusena clearly have the upper hand in this storm. If they want to attempt for the Lord, they can. Kiro again going in the middle of 5 people. They're trying to sustain. There is no
damage dealer trying to back up Mr. Kiro, and he will be taken out miserably here. Haitatsu quite in a deep position, and it will be Rio that will get the kill on him. So right now that's a 1-for-1 trade, and meanwhile Winehouse is trying to get the positioning for himself so that he can get to the back line, and right now that's perfectly done using the electrifying beats to reach Funny Valentine, but Kyashi will be there in just time to protect him from dying, will sacrifice himself for the gold laner. That's a really good trade there. But right now Glue is there, Granger have like 20% HP. Will they able to burst them out? Yes, the damage is quite enough to take down Rio here at least. 3-for-3 fight right now. Peekaboo Predator is there, the Kimi, and the Lord is looking really low, and it will be the Joy that will secure it, but he will be taken down in the skirmish there, as well as Irithel. So that's 2-for-1 Lord for them, and they are just not stopping there. They are blood hungry at this point. They are going in for more, but none other than The damage is there, Justin. Yeah. The damage coming in from the Kimi is there. You know, he is sitting at a very comfortable position as a 5-0-11 right now, and the damage from the Kimi is definitely there. So the team Flux should definitely rethink their engages before they're engaging. But I feel really sad for Kuro because he's just going into the team fights and he's just end up dying. So I just feel sad for him as a Phobius, because you expect your team to jump into the team fights whenever there is a team fight going on, but there was no one to support him or back him up, and with that Kuro will be falling down, and Pika Predator will fall down in that team fight. Oh, but here comes the further airstrike onto that Matilda, but Hiyatsu escaping with a sliver of health. Definitely team fights clearly in favor of Dakusena here, but oh, Jazz taking down Art, and I was really from the beginning I had like my questions about that Kaja in front of such a tanky lineup, because if you do not have team nearby, like these two heroes like Phobius and the Kaja definitely rely on their teammates to engage in the team fights. If you do not show that, then definitely it's not worth having them as a teammate. You should have drafted some different heroes, but it is what it is right now, and we can see Dakusena definitely leading with the advantage. But Kiro I think he's getting tankier right now. He does not care about the blows coming in from the side of Dakusena. He's just driving first in. But same cannot be said about Shari here on the Airtail, but because he is just being heavily focused on by Kyashi here. Kyashi, here comes the pull in coming in from Kaja, and Kyashi will fall down in that fight, and definitely we can see the power spike coming in from Airtail right now, but Funny Valentine is not stopping. He is just going on non-stop, one after another. 7-1-4 on that hero right now. Granger against the Irrital, but definitely Granger is having an upper hand right now in the team fights. Oh, absolutely, man. In the team fights, Granger, because of his absolute OP mobility, will be impactful in the fight. But right now, Flicker has been used by Farsa and also in Feather Strike as a response. But meanwhile, Haitatsu will be taken out by Winehouse there. If I'm not wrong, yeah, that's a Winehouse. Hilarious. Okay, Irithel, he slowly but surely catching up to the farm. He didn't got in the early phase of the game, so this could be something team Dakusena should be worried about, because Irithel is a natural counter to Granger. So if she maintains her positioning, the Granger might have some hard time against them, because she will be able to easily melt out the tanky frontliners, and without the frontliners, the marksman will be taken out easily by Winehouse there. So they have to be really worried out. But right now the fight has already been started. The X Factor, but here comes Irithel with the surprising Lord Steal for his team. Flux finally managed to take a foot against Dakusena in the late game right now, because right now the Irithel is on the power board right now, and he is not stopping. Right now we can see that Kyashi has been able to taken down just before that Lord fight, and with adding in the X Factor of the Joy, he can easily dive in into team fights, and he can easily steal objectives. But oh, that Kaja, not a very good engage, diving into in the midst of 3 enemies right now. And oh, Hero, my boy, why are you going in? Why you keep on engaging, man?
You are clearly at a disadvantage right now, and you're not going to be able to do something here. Despite of the Lord advantage and the sustainability you have, you're definitely lacking in, damage department. So, yeah. I would suggest that Phobius needs to watch his engages, because although having such a huge lead, they can turn this game around very, very easily with the help of that Airtail as well as the Joy. But that Kaja and that Phobius, specifically these two heroes, these two players need to watch their momentum and their engages very well for them to able to capitalize and perhaps win over this match, so that they can go to game number 3 here. But in this game number 2, who will win? It's all up to the execution of these teams. But right now, Dakusen are doing a very good job, securing the kills. But I can see that they are definitely lacking in terms of objective control right now. But with that being said, Funny Valentine is just not stopping. He is like popping out those That's not and those Rhapsody one after the another. He is not running out of energy, and definitely the late game favors the Granger, especially with the skies, the Sky Piercer. So that's gonna be very difficult for the side of Flux to take care of that Granger. Yep, totally. They have to take care of it. But right now we can see Winehouse using that Winter Crown to do some outplays. Glue using the split, and Kimmy will make sure he goes down. That's 3 people down already, but I do not think so they will be able to do something about it. Despite of the fact they are outnumbered right now, but still they are trying to sync up the lanes, especially Granger, so that they can put maximum pressure on them, or at least they can take out the tier 2 here. But right now, Blue trying to bring out someone, but Kiro is too aggressive by himself. Do the work for the Glue here, and he's again in the middle of 5 people there, and the damage. Granger just came and melted him out like a cotton there. And they are in a really bad spot, and the Lord is spawning in 9 seconds. This is not really looking good for Flux again. Might I remind you, Justin, that's 80 stacked Granger on that Sky Piercer, and that's saying a lot, because they have just let him snowball in this game right now, and he's sitting here with a 12-1-4 scoreboard on his personal scoreboard. So I don't think it's gonna be very, very easy for the side of Flux to get even near to that Granger before he melts them out. So that's what we saw, that Kaja just getting melted down right now. He was trying to engage, trying to find a position for him to engage, but he just got melted. And Joy will be forced to back away with the electrifying beats, but not before that. That's not a connects, and that's gonna be a lot takedown for the side of Dakusena, and perhaps things are looking just as bleak for Flux right now. But they will be backing away with that feather airstrike being used. They have a lot less options to defend right now, and definitely I think Dakusena has already good amount of lane sinks right now. They just need to sink the bottom wave right now, and after that they could just go on and end this game. But definitely that Phobius is just not letting them. He is just being the sacrificial pawn right now, and he is just engaging everywhere. But with that being said, here we can see that engage onto Hyatsu. Hyatsu just diving in blindly, and he will be punished for that just before that lot enters the base turret area. And Pika Predator doing a lot with those, those passive bullets, but not going to be able to take down the base turret as of yet. Definitely going some engage onto waves, but he will be using that bird by bird to get away from that fight. Kyashi caught in the middle of that team fight. He will be falling down on the hands of the Irritail. Irritail doing some crazy things in the team fights. Why now is able to take down that Funny Valentine. Oh no, Funny Valentine stays alive, but not for long, I think. But here comes the Irritail with a shutdown onto that Funny Valentine, and Jazz is caught all alone in the midst of 3 enemies right now from the side of Funny Valentine. That was a good outplay, but he could not survive for long. And with that, we can see that that's only Hyatatsu on the side of Dakusena able to defend the turrets. But I think that Irthel definitely wants to go for a game end scenario right now. And will this Matilda be able to stop this advance coming in from Flux? That's
That's a good question. But right now we can see the aggression already being clapped, and they are chasing for that Irithel now, knowing the fact, and we can see the Predator strike trying to zone them out, but look at the damage of Peekaboo chasing out Rio, and he will be taken out already, 1 down out of 5, and they are forced to back to the base again. So right now 44 seconds for the Lord, and Rio's spawn time is 42, so this is not looking good for them. If Dakusena focuses on just starts the Lord after it spawns and bursts it out, they will get it easily. So okay, we can see Mr. Joy quite different sketchy position, and Kimi, the damage is there, and he might be able to escape. Okay, he did just be able to escape the scenario, but XP versus XP fight going on in the blue buff again. Kiro might want to back and be there when the team needs there instead of just going in blindly. So, and right now the Lord is spawning. What do you think? Who might get it here? Definitely, Dakusen seems to be in the lead with like just 1k goal lead. Definitely, gold lead does not matter right now. We are already at the 20-minute mark, and definitely Dakusen are clearly having the advantage over this Lord. But that all might change unless Winehouse decides to join in and steal away that Lord. But it's gonna be a lot for the side of Dakusena, and they really need to start marking that Irithel right now, because that Irithel is just on the power boards right now, and he will be dealing a lot of critical damage. And pair it up with that heavy crossbow on his arsenal, and he will be straight away obliterating the side of Dakusena. So they really need to watch out for that Irithel. They need to lock him down to be able to end this game right now. But it's up to the solid frontliners actually right now. It all comes down to how long they are able to sustain. But we can see that Kyashi is not able to sustain against that Irithel, as well as the combo coming in from waves on that Farsa. Definitely, it's going to be a very problematic engage coming in from the side of Dakusena if they really want to go for a 2-0 right now. But we can see that in Infernal Pursuit, definitely Kiro is waiting his turn, and definitely he will be taking down Kyashi, but that immortality popped out, and Winter Crown used up by Winehouse trying to clear up that Lord, and it seems that was a very good defense coming in from Flux, I might say. They were able to defend that tier 3 turret, the base turret, and with the Lord, so with the enhanced minions. So that was a very good predicament for them. But here comes the feather airstrike from Waves trying to zone away the member of Dakusena clearly having the advantage, but the minions have just started, and just one shot away from that. Oh, that cannon minion just took down the base of Flux right now. Dakusena won because of that minions, and that was quite an astonishing thing to see. But definitely Flux should have defended their base, but it is what it is. Bad luck for them, but minions played a huge role in that match, but it is what it is. And definitely I would say Hero and Rio were sort of underwhelming from the side of Flux. They really need to watch for their engages, as well as the point of engages. But definitely a very good game for Dakusena, a 2-0 on the scoreboard. What do you think, Justin? I mean, yeah, there was a point, like I was saying, Irithel could be really scary in the late game. They have to be really worried, and that's what it was happening there. Irithel was being able to defend the base really easily there, and also some really nice outplays by Winehouse there, by switching items here and there. So yeah, so far they were able to defend it, but yeah, definitely they didn't pay attention. They just the adrenaline rush, man. They just followed up. They be like, we defended it, and right now we might be able to do a clap back, and they just totally ignored the map, and the minion, being the 6th member of Team Dakusena, got the win for them. So yeah. Yeah, so the minions, you need to watch out for those 2 waves after the Lord, you definitely need to defend, and I don't think that Flux was having the mental capacity to go against Dakusena after a second match, but you need to defend. You need to defend after basically after Lord is coming to your base. You get 2 waves of super minions. If you are not able to defend them, then it's game over for you, and that's what happened. That was a bad call, from the side of Flux, I might say, but it was a GG for Dakusena, clean sweeping the floor of
the matches, and they're going to be proceeding on to the next round. I think it's going to be top 8, right, Justin? Yep, it will be top 8. So yeah, they have to be perform even better after this, and we all know how strong of a team they are, though. Looking at the draft, looking at the play style they do. So yeah, they will have equal opponents in the upper phase of the matches. So they have to be really careful. But with this, guys, I guess it's time for the bye. And yeah, do you want to say anything? Yeah, sure. Yeah, it's time for goodbye, Justin, and we'll be seeing our viewers again tomorrow for another matches. So it's a good night till then, and take care to you too, Justin.